Namo tassa. Okay. Anuttaram abhisambodhim sambhujitva tathagato padhamam yamma desesi dhamma chakkam anuttaram sammadeva pavattendo loke appadivattiyam yatha khada ubo anta padipatti jamajjima chadusu hariya satchesu visuddham jnana dassanam Desidham dhammarajena samma sambodhikittanam namena visudam suttam dhammachakkapavattanam veyyakarana padena sangeetantam banamase. Ewang me sutang ekang samayang bhagava varanasiyang viharati sipatane mikadhaye tatrako bhagava panchavakiye bhikkhu amante siddhave me bhikkhave antapapacitena nase Vitapayo chayangame sukama sukalikanu yogo hino gamo poto janiko anario anata samnito yo chayang atakila matanu yogo tuko anario anata samnito Ete te bhikkhave ubo ante anupaga mama jima patipada tathagathena abhisambudha chakukarani jnanakarani samaya vinya yasambodhaya nibbanaya sangva tatikatama jasambhikkhave Majima patipata tathagate na api sambudha chakukarani jnanakarani upasamaya abhinyaya sambodha yanippanaya sangva tatiyayameva aryo atangiko mago seyadidang samma titi samma sangkapo samma Vaja samma kammanto ajivo samma vayamo samma sati samma samadhi ayanko sabhikave majima patipada tathagathena abhisambudha chakukarani jnanakarani upasamaya abhinyaya sambodhaya nippanaya sangva Tati dango banabhikkhave dukkhaṃ arya sacchaṃ jati pidukkha jara pidukkha maranaṃ pidukkhaṃ soka paride vadukkha dhammana subhaya sappidukha appeyehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo dukkho Yampi chang nalapati dang bidukang sangki tena panchupadana kanda dukkha idang panabhikkhave dukkha samudayo arya sacchang yayang tanha pono bhavika nandiraga sahakata tatra tatra pinandini sayadidang kammatanha bhavatanha vibhavatanha idango panabhikkhave dukkha nirodho Arya sachang yotasa yevata haya ases Ganirodo chago patinisago mutti analayo vedango panabhikkhave dukkha niroda gamini patipata Arya sachang
Yaya Ariyo Atangiko Mago Sayadidang Samma Diti Samma Sankapo Samma Vaja Samma Kammanto Samma Jivo Samma Vayamo Samma Sati Samma Samadhi Idang Dukkang Ariyasa Chanti Me Bhikkhave Pube Ananusude Sudamne Suchakung Utapati Nyanang Utapati Panya Utapati Vicha Utapati Aloko Utapati Tango Panita Tukang Arya Sachang Parinye Yanti Me Bhikkhave Pube Ananusude Sudamne Suchakung Utapati Tinyanang Utapati Panya Utapati Vicha Utapati Aloko Utapati Dango Panidang Dukang Arya Sacha Parimnya Tanti Me Bhikkhave Pube Ananusude Suda Suchakung Utapati Nyanang Utapati Panya Vicha Utapati Aloko Utapati Idang Dukkha Samudayo Aryasa Chanti Me Bhikkhave Pupe Ananu Sude Sudamne Suchakung Utapati Nyana Utapati Panya Utapati Vicha Utapati Aloko Utapati Tango Panida Dukkha Samudayo Arya Sachang Pahata Pantime Bhikkhave Pupe Ananusude Sudamme Suchakung Patinyanang Utapati Panya Utapati Vicha Utapati Aloko Utapati Tango Panita Dukkha Samudayo Arya Sachang Pahinanti Me Bhikkhave Pupe Ananusude Sudamme Suchakung Utapati Nyana Utapati Panya Vicha Utapati Aloko Utapati Idang Dukkha Nirodho Arya Sachanti Me Bhikkhave Pupe Anamnusude Sudamme Suchakung Utapati Nyanang Utapati Panya Utapati Vicha Utapati Aloko Utapati Tango Panida Dukkha Nirodho Arya Sachang Sachikata Panti Me Bhikkhave Pube Ananusude Sudamme Suchakung Utapati Nyana Utapati Panya Utapati Vicha Utapati Aloko Utapati Tango Panidang Dukkha Nirodho Arya Sachang Sachikatanti Me Bhikkhave Pupe Ananusude Sudamme Suchakung Utapati Nyana Utapati Panya Utapati Vicha Utapati Aloko Utapati Idang Dukkha Niro Dagamini Patipata Arya Sachanti Me Bhikkhave Pupe Ananusude Sudamme Suchakung Utapati Nyanang Utapati Panya Utapati Vicha Utapati Aloko Utapati Tango Panidang Dukkha Niro Dagamini Patipata Arya Sachang Paveta Panti Me Bhikkhave Pe Ananusude Sudamme Suchakung Utapati Nyanang Utapati Panya Utapati Vicha Utapati Aloko Utapati Tango Panita Dukkha Nirodha Gamini Patipata Arya Sachang Pavitanti Me Bhikkhave Pube Ananusude Sudamme Suchakung Utapati Nyana Utapati Panya Utapati Vicha
Aloko tapati avakivancha me bhikkhave me sujatu suariya sache sueva ti parivatang davata sakara yata buddhang jnana dasana na suisutang ahoasine vatava hang bhikkhave sadevake loke samarake sabramake Sasamana Brahmani Apajaya Sadeva Manu Saya Anutarang Machakang Abhinandung Ting Yato Chako Me Bhikkhave Me Sujatu Suariya Sache Sueva Ti Parivatang Dawada Sakara Yata Buddhang Jnana Dasana Suvisudang Ahosi Atahang Bhikkhave Sadeva Ke Loke Samara Ke Sabrahma Ke Sasamana Brahmani Apajaya Sadeva Manu Saya Anuttara Dhamma Sambodhing Abhisambodho Pachanya Singyanancha Paname Dasanang Utapati Akupame Ayamanti Majati Nati Dani Puna Bhavoti Itamavocha Bhagava Natamana Panchavagya Bhikkhu Bhagavato Vasitang Abhinandam Imasamincha Panaveya Karanasamning Payanya Aya Samato Kondanya Savirajang Vitamalang Dhammachakong Utapati Yankinchi Samudaya Dhamma Sabantang Nirodha Dhammanti Bhavati Teja Bhagavata Dhammachake Bhumma Deva Sadamanu Save Sungetang Bhagavata Paranasiyang Isipatane Nikadaye Anuttara Dhammachakang Bhavati Tang Apatiwati Yang Samanena Va Brahmanena Va Devena Va Marena Va Brahmana Va Kena Chiva Loka Saminti Bhumana Devanang Sadang Sutava Chatu Maharajika Deva Sadamanu Save Sung Chatu Maharajikanam Devana Sadang Sutava Davating Sadeva Sadamanu Save Sung Davating Sana Devanang Sadang Sutava Yamadeva Sadamanu Save Sung Yamana Devanang Sadang Sutava Tusita Deva Dhamanu Save Sung Tusitanang Devana Sadang Sutava Nimma Narati Deva Sadamanu Save Sung Nimma Naratinna Devanang Sadang Sutava Paranimita Vasava Ti Deva Sadamanu Save Sung Paranimita Vasava Tinnang Devana Sadang Sutava Brahmakaika Vasadamanu Savesu Etang Bhagavata Paranasya Isipatane Mikadaye Anuttara Dhammachakang Bhavatita Apatiwati Yang Samnane Nawa Brahmane Nawa Deve Nawa Mare Nawa Brahmuna Va Kena Shiva Lokasaminti Tihatena Kanena Tena Moho Tena Yava Brahma Loka Sadhu Abhoga Chiayancha Dasasaha Siloka Datu Sangampi Sampakampi Pavedi Appamano Chaularo Toba Soloke Paturahosi Atikam Neva Devana Devanubhava Atako Bhagava Udana
Udanye sianya sivatabo kondanyo anya sivatabo kondanyo titidang aya samato kondanya sanya kondanyo tueva namanga hositi Dhamma Chakapawatana Sutang Nititang. So that's given some time for some of the people who might be arriving a bit later to arrive. Then we'll do a little bit of the morning chanting. And then a little bit of a instruction, talk, then break at 10:30. Is that right? I think the morning chanting, the bit of the morning chanting is at the first pages of the book, either in Hindi script or in Roman script. Definitely Hindi script, is that right? Any questions? Okay, so you know where to go in the books. If you want to follow in the books, you can follow either with the Hindi script or the Roman script. The part of the reason for this, we start with the Dhammacakka because I thought that might be a nice thing to try to chant every day whilst I'm in India, as the intention of the group is to try to bring the Dhamma back into India. Whether it's left or not, I don't know, but is to reinforce that. And the Dhammacakka is on the Indian flag, so we might as well use that. Then the morning chanting is just a reflection of the Triple Gem and a very short praise of the Triple Gem, which is a good way to begin practicing this first step of the Noble Eightfold Path of Samadhi, which is, and part of is the assumption, the paradigm, the view that there is something that there are beings that can teach us. The Lord Buddha was enlightened, and there's a teaching that we can follow. This is a practice of right view, that assumption. If you don't have that assumption, it's very difficult to follow any of the rest of the Buddha's teaching. And the practice of the assumption is a repetition, a repetition, a repetition, a repetition, a repetition, and a repetition. And if you don't like repetition, then stop breathing, because breathing is a repetition. So repeat the direction, repeat the assumption, repeat the view. Keep looking from that view, keep working from that assumption. This is a wise thing to do. It will lead to the rest of the path. The right view is the dawn, it's the forerunner of the rest of the path. It's a really important place to begin.
Okay. Yoso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Swakato Yena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yassa Bhagavato Sāvaka Sangho Tanayang Bhagavantang Satamang Sasankang Imehi sakare hiyatara hangaropite hiyati pujayama sadhuno bande bhagava suchira parini pudopi pachima janatanakam bamanasa Ime sakare dukatapana karapute patikanhatu amha kangdi garatang hitaya sukaya arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sanghang Namami Handamayang Buddhasa Bhagavato Pupavakanamakarang Karomase Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handamayang Buddha Biduting Karomase Yoso Tathagato Arahang Samma Sambuddho Vicha Charana Sampano Sukato Lokavidu
Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Sata Deva Manusanang Buddho Bhagava Yo imang lokang sadeva kang samara kang sabrahma kang sasamana brahmaning bhajang sadeva manu sang sayang atinya sachikatawa pavayadesi Yo dhammang dese siya kalayana maje kalayanang pariyosana kalayana Sadhang Saptayang Janang Kevala Paripunnang Parisudhang Brahmacharyang Pakasesi Dhammahang Bhagavantang Abhipujayami Dhammahang Bhagavantang Sirasa Namami Andamayang Dhamma Biduting Karomase Yo so savakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pachatang veditabo inyuhi dhammahang dhammang abhipujayami dhammahang dhamma sirasa namami Andamayang Sangha Biduting Karomase Yo so supatipanno bhagavato savaka sangho Ujupatipanno bhagavato savaka sangho Nyaya patipanno bhagavato savaka sangho Samichi patipanno bhagavato savaka sangho Yadidang chatari purisayukam yata purisapugala Esa bhagavato savaka sangho Ahunayo bahunayo dakinayo Anjali karaniyo Anuttarang punya ketang lokasa Dhammahang Sanghang Abhipujayami Dhammahang Sanghang Sirasa Namami For any of you, is it your first time? Yeah, first time. First time meditating? No. First time meditating also? Well, we'll sit for maybe half an hour or so. For those of you that are very happy meditating, just get on with it. For those that want to listen to any sort of instruction, you're welcome, but you don't have. And see if you find anything that's useful. It's okay, you don't have to have your hands in. Actually, you're just going to be sitting. So I would personally, if I was younger like you, I would sit more on the edge of the cushion so that your knees come flatter, so that you have your knees in what's either called Burmese polite, or if you can sit full lotus, fine, but if you can sit half lotus, fine. So, and then
The intention is in sitting meditation usually, although you can do moving meditation when you're sitting, usually for sitting meditation you're still, okay, so that the body is still. Okay, you want a translation? Do you need a translation? Do you need a translation? You need a translation? Okay. So if you're coming in now, you're fine. You're welcome. Come in. We're going to have some translated. Yes, turn off your phones or turn your phones on silent so your babies don't cry. You don't have to attend to your babies. Okay. अजान कह रहे हैं कि हम सब अपने फोन को बंद रख लें. So I'll give some general instruction and then we'll just sit quietly, because if we're having instruction whilst I'm trying to guide meditation, it gets too complicated. आप थोड़े सामान्य निर्देश देंगे और उसके बाद ध्यान करेंगे, क्योंकि उनके विचार में अगर ध्यान के साथ साथ इंस्ट्रक्शन देते हैं थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है. The main thing about meditation is to enjoy it. ध्यान का मुख्य ख्याल रखने की जरूरत है कि हम उसको एंजॉय करें, हमारे पे बोझ न बने. It may be work, but it's work that if you can enjoy it, then you keep doing it. ये एक काम लग सकता है, लेकिन अगर हम उसको एंजॉय करते हैं तो फिर आप उसको करते रहेंगे. I sometimes describe it as examining your universe from the inside. कभी-कभी इसको इस तरह से समझा जाता है कि अपने अंतर को अंदर से देख लें, अपने संसार को अंदर से देख रहे हैं. Because you're looking, you're training yourself with the stillness of the sitting posture to look into your own receiving of the experience and how you respond to experience. आप शरीर को स्थिर रख के देख रहे हैं कि किस तरह से आप जो बाहर अनुभव हो रहे हैं उसको लेते हैं और कैसे उसको उसकी उस पर विचार करते हैं, कैसे उसको परसीव करते हैं. In terms of posture, a stillness that is not rigid is important. जो आसन हो हमारा ऐसा हो जो स्थिर रहे लेकिन एकदम रिजिड ना हो, पत्थर जैसा ना हो. Okay, so there's a sense of connection. If you want to see me, you can move your cushion so that you're not peering around somebody. As I say, I want you to be happy in this. I don't want you to be straining. कह रहे हैं कि आपको अगर देखने में दिक्कत हो तो क्वेश्चन को इधर-उधर कर लीजिए. Because I hope you're not coming here to torture yourself. क्योंकि कोई भी यहाँ पे अपने आप को परेशान करने नहीं आता. You're coming here, I hope, because you wish yourself well. और मैं आशा करता हूँ आप इसीलिए आए हैं कि आप अपना भला चाहते हैं. And you wish to understand. और आप समझना चाहते हैं. You wish to be free from ignorance. किस प्रकार से हम अज्ञानता से मुक्त हो सकते हैं. So you're practicing, you're in this stillness, you're giving yourself a gift of time and space to suffer less now and in the future. You're practicing compassion. जब आप स्थिर होकर ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आप अपने को एक परिस्थिति पैदा करते हैं कि आप इस समय भी
इसमें परेशान ना हो, भविष्य में भी परेशान ना हो। So reconnect with that, recollect that, remember that. तो इस बात को याद रखें और हमेशा इससे जुड़े रहें। And with your hands, you usually have your right over your left, and your fingers slightly touching. हाथों को जैसे Thumb slightly touching. Sorry. अजान दिखा रहे हैं वैसे देख लें। But sometimes it gets a bit stressed, so you can put your hands on your knees if you want. And if you want to show off, you do this. आप चाहें तो हाथ अपने नीज के ऊपर भी रख सकते हैं या किसी मुद्रा में रख सकते हैं। It's sometimes helpful, but it tends to be a bit of a show off. And then you can know almost any time whether your breath is going in or going out. You don't need to close your eyes. You know whether your breath is going in or going out. And how you are in the world changes when you know that much, at least it does for me. आप किसी भी परिस्थिति में ये जानने में सक्षम है कि सांस अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है, और उसको जानने से ही हमें अपने बारे में कुछ जानने में मदद मिलती है। And you can play and know through experimenting what a long breath is like and what a short breath is like, what an in breath long, what a long out breath, what a short in breath, what a short out breath. How does it all work? You can start to examine that, because you're giving yourself the time and the energy to know something that's very important. Because if you don't know something that's important, you're likely to make a mistake. आप ध्यान के समय ये जान सकते हैं कि सांस छोटा है कि बड़ा है, सांस आ रहा है कि बाहर जा रहा है, और ये जानना अपने बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण है। इसको महत्व को अगर हम भूल जाएंगे कि महत्वपूर्ण है, तो हम फिर उसको उतनी सीरियसली नहीं करते। ये समझना जरूरी है कि ये जानना काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। And ignorance is something that you're doing. It's a verb. You're ignoring something. And if you're ignoring something important, then you're likely to make a mistake. जो शब्द अंग्रेजी का इग्नोरेंस है, उसका तात्पर्य हिंदी में कहें तो अज्ञान था। तो बता रहे हैं कि अंग्रेजी के शब्द को अगर हम उसका शब्दार्थ अलग अलग करें तो उसका मतलब है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम उस चीज को महत्व नहीं दे रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको अनदेखा कर रहे हैं। And I think that breathing is important. If you're not breathing, you're in trouble. सांस लेना आप समझ सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। अगर आप सांस नहीं लेंगे तो दिक्कत होगी। And not knowing how the breathing works, how the long breath or the short breath works, and is ignoring something that's important. अगर हम ये नहीं जानते हैं कि किस तरह से लंबा सांस काम करता है, किस तरह से छोटा सांस काम करता है, तो हम एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है। And then you can train yourself to know the whole of the breath or the whole of the body breathing. And there's a deliberate unclarity about that, what that means, because it's something that only means something to you. It's not something that I can tell you what it is. You have to find out for yourself. How does the whole of the body breathing, or what is the whole of the breath? So there's different theories about tracing it from here all the way down and back, or the experience of the whole body breathing, or whatever, or just sustaining attention at one point through the whole of the cycle of the breath. All of these are deliberately not clear. It's something you have to train yourself to do. इस तरह से साधना करते करते हम ये भी सीख सकते हैं कि किस तरह से सारा शरीर के माध्यम से सांस लिया जाता है, और वो यहाँ पे नासिका के द्वार पे सांस रख सकते हैं और सांस अंदर जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है, फिर कैसे बाहर आ रहा है,
ये सब हमको सीखने की जरूरत है, इसके लिए अभ्यास करने की जरूरत है। But the direction is towards peace and stillness. So you have to figure out how that can bring peace and stillness to this sense of sitting here as the body calms down. और हमारा जो लक्ष्य है वो है कि शांति हो और हम स्थिर हो जाएं, और वो हम आपको खुद अपने आप मालूम करना होगा किस तरह से हम शरीर को, सांस को जानते हुए भी शरीर और मन को स्थिर कर सकते हैं। And sustaining the interest and the zest to actually do this and being happy that you're doing this so that the patterns of your heart reveal themselves. और हमें इसके अंदर अपना रुचि बना के रखनी है ताकि हमें अच्छा लगे ये करना और हमको इसको करने में एंजॉय हो करें हम। And then naturally, as the patterns of your heart reveal themselves, there's an interest in making that calmer. तो इस तरह से जो हम रुचि कर लेते हैं इसको काम करने में, तो हम अपना एक कर्म बनाते हैं जिसके माध्यम से ये अभ्यास हमारा और सहज हो जाता है। So the whole tone of this experience, internal and external, the receiving and the responding, is revealed and then elevated and then sustained, released, so that the truth is known of the uncertainty of existence and things are taken less personally and can be let go of. तो सांस को जानते जानते हम उसके नित्यता को देख पाते हैं कि वो बदलता रहता है, और वो आगे बढ़ते हुए हम इनको मैं का भाव जो है, जो पर्सनल लेने का भाव है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है जब हम इसको ठीक तरह से समझ के साधना करते हैं। Because everything has the nature of the breath, the same nature as the breath. It's all important, it all has its place, and it all arises and ceases in this uncertainty. जो ये एक अनसर्टेनिटी है वो सांस का स्वभाव है, और जो सांस का स्वभाव है वो हर चीज का स्वभाव है। तो अभ्यास करने से हम इसको ठीक से समझ पाते हैं। And the lack of the control that one has, or the limited control that one has over it, is something that's appreciated and understood. You cannot decide today to have only in breaths and have your out breaths tomorrow. और जो इस सांस की प्रक्रिया पे हमारा जो बहुत लिमिटेड कंट्रोल है, हम उसको भी जानते हैं और उसको पहचानते हैं, क्योंकि सांस हमारे जीवन का इतना इम्पोर्टेंट अंग है, तो उस पर हमारा कंट्रोल बहुत ही कम है। जैसे हम ये नहीं निर्धारित कर सकते कि कल मैं इस तरह से सांस लूंगा। But you can work on working out how this thing is and how it works. This is something you can work with, and we can do this for the next 20 or 30 minutes and just like play with it, examine it, like you're playing with a new toy, but it's actually a very old toy. You've had this toy for ages. This is the breath. You can play with it, you can examine it, you can work out how it works. अब हम अभ्यास करेंगे 25-30 मिनट तक और देखेंगे कि सांस को के अंदर किस तरह की प्रक्रिया होती है। आप इसको एक खेल की तरह कर सकते हैं, जो आपको लगेगा कि नया है, लेकिन सांस तो जन्मों से चला आ रहा है। लेकिन उसको अगर आप एक इस भावना से करेंगे कि जानना है क्या हो रहा है, तो उससे अधिक लाभ होगा। तो ये बोझ नहीं बनेगा, इट बिकम एंजॉयमेंट रहेगी। Okay. The beings wish you well in this. तो अब हम अभ्यास करेंगे।
I find it helpful also at the end of a period of meditation to lightly review what has happened. अजान सुझाव देते हैं कि हमको विवेचन करना चाहिए कि क्या हुआ उस ध्यान की अवधि में. Mindfulness with breathing is the basic, the almost universally applicable object for meditation. सांस को ये कहा जाता है कि सबके लिए सब उपयोगी एक ध्यान का आलंबन बनता है. Mindfulness with breathing. It covers all the aspects of the areas of attention that are fundamental for liberation and lead only one way. खाना खाते समय भी सजग रहना भी एक साधना की तरह है, जो हमें जो 4 आयाम बताए गए हैं साधना के, सजगता के, उनमें से एक. It is important that you breathe. ये महत्वपूर्ण है कि आप सांस लें. And how you receive the breath and how you release the breath reveals a lot of the secrets of your universe. आप किस तरह से सांस लेते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं, उससे आपके अंतर का काफी ज्ञान मालूम पड़ता है, सूचना मिलती है. And you can keep this mindfulness with the breath going all through the day because you're always breathing. और सांस के प्रति सजग रहना हम सब पूरा दिन कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा सांस लेते रहते हैं. You think, our teacher and other teachers have said that if you think you don't have time to meditate, then you don't have time to breathe. Or if you have time to breathe, then you have time to meditate. कई आचार्य कहते हैं कि आप अगर ये सोचते हैं कि सांस को मेरे पास समय नहीं है ध्यान करने का, तो ठीक नहीं है, क्योंकि यदि आपके पास सांस लेने का समय है तो ध्यान का भी समय वही है. So notice, like we're going to be breaking for a while for the meal, then we'll come back, and then notice over the next 3 hours how often you can notice whether your breath is coming in or going out, whether the breath is long or short. Even as you're talking, you're eating, you're going around different things, just notice and like touch the breath. And notice how, if you play with the breath, how that affects your mood. अभी भोजन के लिए अवकाश होगा तो उस समय भी आप खाते समय, बात करते समय भी सांस की जानकारी रख सकते हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से सांस के साथ आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो मूड है, उसका क्या संबंध है. So it's that important. Actually, it's not a small thing. If you keep your attention with your breath for the next 7 days, then it will have a great effect on your life, actually. And if you keep it going for 2 or 3 months, it'll change actually how you are in the world, how you are with yourself. कई बार हम सोचते हैं कि सांस की जानकारी क्या महत्वपूर्ण है, तो अजान कह रहे हैं कि अगर आप 1 हफ्ते के लिए भी सांस की निरंतर जानकारी बनाए रखेंगे तो आपका
जीवन बदल जाएगा। और अगर कुछ महीने तक करें तो सचमुच में बहुत प्रभाव पड़ेगा। You'll notice that when you're relaxed and at ease, you breathe. The belly goes out as you breathe in and goes in as you breathe out, like a baby's belly. Because babies are relaxed when they breathe, they just breathe. They breathe in with the belly going out and breathe out with the belly going in. जब आप रिलैक्स्ड होंगे, आराम कर रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपके सांस के साथ साथ जो बेली है, जो हमारा पेट है, वो आगे बढ़ता है, फूलता है या सिकुड़ता है। और छोटे बच्चे को भी जब वो रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप देख सकते हैं, उनकी पेट जो है फूलता है और सिकुड़ता है सांस के आने जाने के साथ। A lot of us have been in the habit of breathing in with the belly going in and breathing out with the belly going out. हम में से कईयों की आदत है कि अब सांस लेते हैं तो क्योंकि टेंस रहते हैं तो उससे पेट अंदर जाता है जब सांस लेते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो बाहर जाता है। जबकि सामान्यतः एक रिलैक्स्ड मूड में सांस जब अंदर लेते हैं तो पेट बाहर आता है, और सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। And that's actually quite an anxious breath or a slightly stressed breath. And you breathe in with the belly. And it's a sort of it's a stressing breath. अगर ऐसा होता है कि हम सांस लेते समय पेट अंदर जा रहा है, तो वो एक स्ट्रेस की कंडीशन को दिखाता है कि हम तनाव में हैं और उसके कारण से सांस ले रहे हैं। The habitual, if we feel stressed a lot, then we keep that breath pattern up a lot. And even when it's not a particularly stressful situation, the breath will tell us at a very deep level, there is stress, I'm stressed. यदि हम कोई बहुत तनाव में रहते हैं तो आपकी आदत पड़ जाती है कि सांस के अंदर लेते समय पेट अंदर जाता है। और ये फिर जब आप तनाव में ना भी हो तब भी, क्योंकि आदत से ऐसी हो गई है, तो सांस के आदत के हिसाब से ही पेट अंदर जाता है जब सांस आता है। और उस तरह से आप अगर सजगता से देखें तो मालूम पड़ता है कि तनाव है, मन में, शरीर में तनाव है। Whereas if you get used to and familiar with the relaxed breath, the belly going out as you breathe in and coming in as you breathe out, then even in stressful situations, there'll be a part of your body and mind that'll be saying, it's not that bad. इसके विपरीत अगर आपकी आदत है कि सांस जब रिलैक्स रहते हैं, अधिकतर सांस अंदर जाता है तो पेट फूलता है और बाहर जाता है तो सिकुड़ता है, तो इस आदत के कारण क्या लाभ होता है कि अगर आप तनाव में भी होंगे और सांस फूलता है, अंदर जाने पे पेट फूलता है, तो मन एक तरह एक स्तर पे हमारा मन और शरीर रिलैक्स रहता है, तो आपको पता चलेगा कि बड़ी बात नहीं है, ये भी बदल जाएगा। That's why I encourage you with a sense of playing with it and learning, how does it feel? How do your emotions work with the breath? How is your thinking affected by how you breathe? How is the tone of your existence affected with the breath? And realizing that your control over it is not very big. अगर आप ध्यान करते हुए खूब सजग रहते हैं, सजगता से देखते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे मन की स्थिति का, शरीर की स्थिति का सांस के आवागमन से बहुत भारी असर है, बहुत ही डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि हमारा जो कंट्रोल है वो बहुत थोड़ा है, वो मन की परिस्थिति के कारण सांस की आवागमन कंट्रोल ज्यादा होता है। And you can use the whole of your experience to really learn from life, learn about life. तो इस सांस के अनुभव से इस तरह से हम अपने सारे जीवन के बारे में सीख सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, तनावपूर्ण है, रिलैक्स्ड है।
I talk a lot about giving attention. When you give attention to your breath, you're not demanding it do anything, but you're giving attention. And that giving of attention is like, what is happening here? The sort of openness to whatever it reveals. You're not trying to find peace or get anything out of this, but just giving life to your life. ये मैंने कहा था कि हम ध्यान करेंगे उस तरह सांस को ध्यान देंगे उसका केवल मंत्र तात्पर्य यह है कि हम एक जिज्ञासु की तरह सांस को जान रहे हैं वो क्या हो रहा है सांस कैसे जा रहा है कैसे आ रहा है हमारे मन में ये भाव नहीं है कि हमें अपने लिए शांति पैदा करनी है या मुझे कुछ इससे प्राप्त करना है केवल एक जिज्ञासु की भांति सांस के आवागमन की ओर ध्यान देते हैं As we go down for the meal and things, I decide to again to mention something that I mentioned yesterday about the meal, the sense of I around receiving something as important as food. भोजन करते हुए के समय भी हम जाएंगे तो जैसे कल भी कहा था तो आज मैं दोहरा देता हूँ कि भोजन लेते समय जो मैं का भाव रहता है कि ये मेरे लिए है ये मैं हूँ मेरा भोजन है उसको जांचने की आवश्यकता है The practice we have here is that all of the food is offered first to the bhikkhus. यहाँ पे जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार भोजन सबसे पहले भिक्षुओं को दिया जाता है So it's all ours. It's all for me, it's all ours. तो एक अगर इसको स्ट्रिक्टली ऑफरिंग के तरीके से देखें तो सारा भोजन आप तीनों का ही है तो ये कह सकते हैं कि सारा भोजन हमें दिया गया है And then we put it in, it's all for us. So, and then we put some in our bowls and then it's mine. तो हम जब समझते हैं कि ये सारा टेबल में लगा हुआ भोजन मुझे हमें दिया जा रहा है और फिर उसमें से कुछ निकाल के अपने बाउल में डालते हैं तो लगता है अच्छा ये तो मेरा है When does it become me? तो ये विचार का शब्द विचार करने योग्य है कि ये कब मैं बनता है You eat it and swallow it. If you get sick, when is it me? जब आप भोजन को खाते हैं तब वो आपका बनता है आप बनते हैं उससे What happened to yesterday's food? और जो कल भोजन किया था उसका क्या हुआ What do you actually own? क्या हम कह सकते हैं कि वो मेरा है And notice that, right? I mean, food is quite sort of interesting and easy because you can, you know, when the monks, we give it up, we say, this is all for the lay people, we give the blessing, we give the gratitude for it, and then it becomes your turn and you've got your plate and all the food is for you. And then you put it on your plate and you think, well, this is mine. And then when does it become me? अजान बता रहे हैं कि जब हम लोग भिक्षु लोग भोजन ले लेते हैं तो बाकी भोजन हम कहते हैं आपको कि आप लोग भोजन कर सकते हैं हम ब्लेसिंग्स देते हैं और फिर आप भोजन लेते हैं और अपनी प्लेट पे डालते हैं तो फिर आप कोई भाव आता है ये मेरा है ये मेरे लिए है और कब ये मैं बन जाता है पता नहीं चलता हमें Notice your experience of the taste, of the texture of the emotions around it, about why are you consuming this? How are you consuming this? How's your breath with this? भोजन करते समय उसका स्वाद उसका लेते समय आप ये भी देख सकते हैं कि आप किस तरह से उसको ले रहे हैं और उस समय आपका सांस कैसा चल रहा है किस तरह का इमोशन जाग रहा है I'm encouraging you to keep your meditation going for the next 3 months, you see.
starting now, every now with whatever you're doing. तो जान कह रहे हैं कि मैं आपको सबको एनकरेज कर रहा हूँ कि आप साधना निरंतरता से बनी रहे अगले महीनों तक, क्योंकि हम भोजन तो करते ही रहते हैं, तो अगर भोजन के प्रति भी सजग रहेंगे, सांस को जानेंगे, तो हमारी साधना निरंतर बनी रहेगी. And notice how, if that changes how you are in your universe. और ऐसा करने से आप ध्यान कर रखें कि किस तरह से आप अपने बदलते हैं और इस संसार में आपका जो आंतरिक संसार है वो किस प्रकार से बदल जाता है. Are unwholesome qualities decreasing and wholesome qualities increasing? क्या अकुशल गुण जो है हमारे वो कम हो रहे हैं और कुशल गुण बढ़ रहे हैं? Okay. This is your test of your spiritual progress. ये हमारी साधना का जो प्रगति है उसका एक बहुत अच्छा मानक है. Okay. So keep breathing and enjoy yourselves. तो सजग रहें और को अपने को एंजॉय करें. Samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadi swakato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato savaka sangho Sanghang Namam.